So, hello everyone for today's WhatsApp webinar. So today I'm excited to launch हमारा जो अभी नया फीचर रिलीज हो रहा है व्हाट्सएप हब. सो मेनली जस्ट टू बिगिन विथ, अभी तक जो एडवाइजर्स व्हाट्सएप यूज करते आ रहे हैं, सो व्हाट डू यू गाइस यूजुअली डू? इट्स बेसिकली, लेट्स से आपके अगर पूरी टीम है तो 4-5 लोग की टीम होगी, तो एवरीवन हैज देयर ओन व्हाट्सएप नंबर्स. बिजनेस अकाउंट होगा या पर्सनल अकाउंट भी होगा. उसमें फिर आप लोग नॉर्मली कस्टमर्स के साथ चैट करते हो, एंड क्वेरी हो गया, डाउट हो गया, कुछ भी डॉक शेयरिंग, ये सब चीज सब आप ऑनलाइन व्हाट्सएप के थ्रू कर लेते हो. सिमिलरली कुछ अगर हैप्पी दिवाली, हैप्पी बर्थडे भी भेजना हो, यू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स manually, right? So what we aim to do with this is we are trying to integrate WhatsApp with an official WhatsApp number, जहाँ पे all things, since we already have all the data points with us, we are trying to seamlessly integrate WhatsApp with our interface. So let me walk you through the presentation firstly, and then we'll come to the demo as well. So so या सो करंटली अभी चैलेंजेस अगर मैं समझाना चाहूँ तो करंट चैलेंजेस क्या होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रोसेस आई मेंशन दैट यू गाइस आर फॉलोइंग. करंट प्रोसेस में क्या होता है कि मान लीजिए 4 RM के पास 4 नंबर है. नाउ लेट्स से सागर इज टॉकिंग टू अ पर्सन से सुप्रिया RM में. अब उसमें क्या हो रहा है कि लेट्स से सुप्रिया गोज ऑन लीव, मेरी क्वेरीज गेट स्टक बिकॉज व्हाट्सएप उसका बंद होगा या शी इज ऑन लीव एंड शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एंड सो ऑन सो फोर्थ. Saral, I think you're drawing something on the screen. Can you do that, please? Uh, थैंक यू. या सो हाँ, सिंह, तो वो सब में क्या होता है कि बहुत बार बॉटल नेक हो जाता है कि RM अगर टिकट फॉरवर्ड नहीं करा तो क्वेरी अटक गई. कभी किसी को कुछ म्यूचुअल फंड खरीदना है बट RM इज नॉट अवेलेबल, कोई मीटिंग में गए, कुछ गए, तो वो एक बॉटल नेक यूजुअली रहता है. दूसरा, कंटेंट क्रिएशन भी, अगर मुझे लेट से कंटेंट किसी को भेजना है, कोई हैप्पी दिवाली वगैरह, सो आइदर मैन्युअली बना बना के भेजना पड़ रहा है या कुछ ब्रॉडकास्ट भी किया. So it is completely, even let's say if 4 of your people are doing those campaigns, they are doing it in their own tone. So उसमें एक inconsistency आ जाता है कि वो ब्रांड का जो कंटेंट स्टाइल होगा वो शायद कंप्लाई ना हो रहा हो. दैट इज अनदर प्रॉब्लम. तीसरा, अगर मैं ईमेल से भी कंपेयर करूँ व्हाट्सएप को, तो व्हेन यू गाइस लेट्स से डू कैंपेन्स की, अभी कुछ भी एग्जांपल ले लो, लेट्स से SIP ड्राइव करना है, तो सबको आप बोल रहे हो कि लेट्स डू SIP ऑन लेट्स से 5th of March या 10th of March, तो उसमें क्लाइंट का ओपन रेट्स ईमेल पे सिग्निफिकेंटली कम होगा एज कम्पेयर टू व्हाट्सएप. सो व्हाट्सएप पे आप मैसेज भेजो तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि क्लाइंट विल सी एंड रिस्पॉन्ड टू दैट मैसेज एंड इवन मे बी पार्टिसिपेट इन इट. सो वो एक अलग रहेगा. सिमिलरली आपका पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एंड ट्रैकिंग का भी चेंजेस आता है कि हर बार कुछ अलग क्वेरी अलग बंदे को जा रहा है, या इवन टू ट्रैक अ क्वेरी कि उसने व्हाट्सएप पे रिवर्ट किया नहीं किया, आपको कुछ क्लैरिटी अनलेस यू कम्युनिकेट विद द राइट पर्सन वो नहीं हो पाती. सो विथ व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, उसमें चेंज क्या आएगा? जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, आई थिंक स्क्रीन शेयर. या हाँ. सो अभी हम लोग ने, अगर लेट से अगर एक ऐसा टूल हम लोग जो लाए हैं, उसमें अभी क्या कर रहे हैं कि ये सारी चीजें एक सेंट्रलाइज सिस्टम ला रहे हैं, जिससे ऑल योर टीम मेंबर्स आर वर्किंग ऑन वन सिंगल व्हाट्सएप नंबर, एक ऑफिशियल वेरीफाइड नंबर, जिससे आप सारे लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह से सारे कम्युनिकेशन हो रहे हैं. तो लेट से इफ एन RM इज ऑन लीव और समवन इज गॉन आउट फॉर अ मीटिंग, क्लाइंट की क्वेरी एटलीस्ट दूसरा RM या दूसरा टीम मेंबर देख के दे कैन स्टिल गेट इट रिजॉल्व. सो वो एक बेनिफिट आ रहा है. दूसरा, आपका बॉटल नेक्स्ट भी उसी एंगल से निकल गया. सिमिलरली आपका, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें अगर हम सिस्टम से इंटीग्रेट कर ले, तो बहुत सारे प्री अप्रूव टेम्पलेट्स रहेंगे, बहुत सारे आप टेम्पलेट बना बना के रखेंगे, हैप्पी दिवाली हो गया या कुछ भी कम्युनिकेशन, बर्थडे ग्रीटिंग्स है वो. सो एवरीथिंग इज नाउ कंसिस्टेंट इन टर्म्स ऑफ, आपको पता है कि एक ऑटोमेटेड वर्कफ्लो हो गया, टाइम भी आपका सेव हो रहा है काफी बार, कि सब रेडीमेड सब पड़ा हुआ है, खाली जाओ क्लिक सेंड दबाओ और सेंड हो जाएगा बस. दूसरा, आप कन्वर्सेशन भी वहां पे मैन्युअली आप कितना ही डायनामिक चीजें कर पाए, इट इज ऑल स्टैटिक कंटेंट की सबको हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे भेज रहे हो. वेर एज हियर विद डेटा यू कैन इवन सेंड रिपोर्ट भेज दिया, कुछ कंटेंट भेज दिया, रिमाइंडर्स भेज दिए कि आपकी SIP कल डेबिट होने वाली है, मैच्योर होने वाली है, वट एवर. So those kind of things you can do when you have some integrations with WhatsApp, right? So that is the difference basically between a normal WhatsApp and an integrated WhatsApp.
सो कमिंग टू हमारा जो अभी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, सो करेंटली वील बी लॉन्चिंग इट इन बीटा स्टेज एंड इनिशियली दिस कॉल, एज आई वॉक यू थ्रू इट एंड शो यू द होल डेमो, I'll also walk you through how the onboarding process will look like, and because the onboarding process might take some time for some of you, इसलिए थोड़ा onboarding point of view से we are starting this session early. So just to give you a brief कि अभी इधर क्या क्या benefits है. So see, these are the 8 benefits that you get with a वेरीफाइड व्हाट्सएप, वेयर एक तो आपका खुद का ब्रांड आपका बढ़ जा रहा है कि लेट से व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ कस्टमर, अभी कस्टमर को एक प्रॉपर ग्रीन टिक नंबर या बोलो आप या एक कंपनी का ऑफिशियल नंबर से आ रहा है मैसेज, तो एक आइडेंटिटी आपका एक चेंज हो जाता है. दैट सेम थिंग ऑल्सो एज यू गाइस ऑलरेडी नो, एक आपका खुद का ब्रांड का ऐप भी होता है, तो वो ऐप में भी आपको एक अपलिफ्ट मिलता है, राइट, कि दिस एडवाइजर ऑलरेडी हैज हिज ओन ऐप, सो ही इज इन फॉर अ लॉन्ग टर्म एक तरह से. So that is there. Second आपका आ गया green tick, like I mentioned. If you have the so green tick again, I'll get into details. Sorry, I'll get into details later. But green tick का भी option रहता है Facebook के साथ. When you do the WhatsApp verification और business account मिल जाएगा, धीरे धीरे you will start getting green tick verification also. Like अगर आपने notice किया होगा, हमसे जो भी communication आपका आता है with RM से भी आप discuss कर रहे हो, all the our numbers are verified. सो इट्स एक वो भी एक ट्रस्ट का फैक्टर आ जाता है. दूसरा आपका लाइक आई ऑलरेडी मेंशन्ड सेंट्रलाइज चैट मैनेजमेंट भी रहेगा, सो ऑल योर आरएम्स कैन वर्क ऑन द सेम विंडो, नॉट मिसिंग आउट ऑन एनी चैट्स. इवन फॉर क्लाइंट इट्स जस्ट वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ही डजंट हैव टू सेव मल्टीपल आरएम्स के मल्टीपल फोन नंबर्स. एक ही नंबर पे आप कॉल मतलब मैसेज करो एंड देयर इज समवन टू टेक केयर ऑफ योर क्वेरी. फिर नेक्स्ट है टीम, मतलब अगेन एवरीवन इज वर्किंग ऑन द सेम व्हाट्सएप, तो टीम का कोलैबोरेशन भी इजी है. आपने कुछ टिकट इसको असाइन कर दिया एंड बोला कि hey we hope take it from here, and so on so forth. So मतलब उसमें फिर आपको हर एक टिकट में बिकॉज मैसेज आपको आया, यू डोंट हैव टू कीप फॉलोइंग अप. सो वो एक चीज है. देन सिंस इट इज इंटीग्रेटेड विद सिस्टम्स, आप टारगेटेड बोलो या बल्क में कुछ कैंपेन्स करना है, वो भी आप इजीली कर पाएंगे. टारगेटेड मतलब आप, लेट मी टेक एन वाइल्ड एग्जांपल. मान लीजिए ऐसे क्लाइंट्स है जिन्होंने लेट से लास्ट 1-2 साल में एसआईपी स्टार्ट ही नहीं किए, उनको आप एक मैसेज भेज दीजिए कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट एन एसआईपी टुडे. या पीपल हु आर लेट से इन्वेस्टिंग इन फॉर एग्जांपल अंडर परफॉर्मिंग स्कीम्स, उनको आप टारगेट करके वैसी ऑडियंस फिल्टर करके यू कैन इजीली डू अ कैंपेन कि तुम ये स्कीम में कर रहे हो, इससे निकाल के. सो एवरीथिंग विल बी सिस्टम ड्रिवन, सो यू डोंट इवन रियली हैव टू बॉदर in putting the right information in the right place, so automatic system will take care of itself. Then there is also real time notifications. आपको let me take 2 or 3 examples. एक हो गया let's say OTP अभी SMS पे आते हैं, maybe later on you can send them on WhatsApp. Similarly let's say transaction हो गया, place कर रहे हो, success message reject हुआ तो reject, those kind of things you can directly send. पेमेंट लिंक हो गया, आप सीधा व्हाट्सएप पे चला गया क्लाइंट को, तो इंस्टेड ऑफ दैट ईमेल जो बीएससी एन एससीएमएफयू का रहता है, टीडीएस ईमेल्स पे जाओ, जाके पे करो. हियर व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर जस्ट सेंडिंग इट डायरेक्टली, सिस्टम इज सेंडिंग इट टू द कस्टमर व्हाट्सएप पे. व्हाट्सएप पे क्लाइंट वो पेमेंट कर देगा, आपका उसको सक्सेस का मैसेज व्हाट्सएप पे आ जाएगा एंड आपका सिस्टम में ट्रांजेक्शन पंच भी हो गया ऐसा. ठीक है. सो so next is workflows and quick replies. So quick replies में so basically इसका we'll understand a bit about this concept, तो तब आपको समझेगा. तो क्विक रिप्लाई होता क्या है. जैसे 2 एग्जांपल मैं लूँ कि मान लो जैसा when you chat with us on our official WhatsApp number, आप कभी कभी लिखते हो ना वॉच डेमो वीडियो, या यू सी सम बटन राइट, when you tap आपको एक ऑटोमेटेड रिप्लाई आता है कि रिक्वेस्ट अ कॉल बैक फ्रॉम आरएम, तो देयर इज अ थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, आर आर एम विल रीच आउट टू यू. वो टाइप के मैसेजेस यू कैन इजीली सेटअप, और उसमें इजीली यू कैन सेटअप वेरियस थिंग्स. अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ एक डेमो वीडियो, तो कोई एडवाइस बोलता है वॉच डेमो वीडियोस. सो डेमो वीडियोस में आप यू कैन रिवर्ट कि क्लाइंट को मिल गया वर्कफ्लो पॉइंट ऑफ व्यू से कि, तो उसको क्लाइंट को पूछेंगे कौन सा डेमो वीडियो देखना है, गोल का देखना है, एलएमएफ का देखना है, लेट से ट्रांजेक्शन का देखना है. अब क्लाइंट बोलता है मुझे ट्रांजेक्शन देखना है, उसमें आपको ट्रांजेक्ट करना सीखना है, अकाउंट क्रिएट करना सीखना है, मैंडेट. सो स्ट्रक्चर आप पूरा एक दे सकते हो कि किसके बाद क्या, और एंड यू डोंट हैव टू रियली लुक इनटू एंड गेट इनटू टॉकिंग टू द कस्टमर. वो पूरा वंस यू जस्ट सेट दिस अप, पूरा ऑटोमेट हो जाएगा विद दिस. ठीक है. सो दिस वाज दैट. अभी लेट्स मूव अहेड. जस्ट गिव मी अ सेकंड. या. So, Abhi, before now we are about to jump to the demo as well. So before that,
व्हाट्सएप के कुछ टर्मिनोलॉजीज है, मेरे को एक एक करके आई जस्ट वांट टू ब्रिंग यू ऑल ऑन द सेम पेज so that when we are looking at the system, these things are very easy for you to grasp and understand what I'm talking about. Okay. So पहला है templates. So templates are at एकदम core of WhatsApp. So जब भी आप business WhatsApp की बात करते हो, so business WhatsApp में from business and communications to anybody usually are through approved templates. अब प्री अप्रूव टेम्पलेट्स क्या होते हैं कि आप कुछ एक टेम्पलेट एक मैसेज बनाओ, लेट्स से हैप्पी दिवाली ये वो करके, एंड आप एक अप्रूवल के लिए भेज दो. नाउ व्हाट्सएप हैज सम एआईस दैट दे अप्रूव द मैसेज और डिसअप्रूव द मैसेज बिकॉज दे हैव सम पॉलिसीज कि यू नो गैम्बलिंग एंड ऑल दैट टाइप ऑफ मैसेजेस आर प्रोहिबिटेड. सो वो सब एंगल से दे विल फिल्टर आउट मैसेजेस एंड दे विल अप्रूव और रिजेक्ट मैसेज अकॉर्डिंग टू देयर compliance angles. Assuming your message is approved, then you can send this template to anybody and everybody, right? नेक्स्ट इज कैंपेन्स. कैंपेन्स आपका हो गया कि मैं भी टेम्पलेट बना ली, लेट्स से आई क्रिएटेड हैप्पी दिवाली का टेम्पलेट, देन आई एम शूटिंग इट टू 10 clients, वो हो गया कैंपेन्स. सो सेंडिंग मैसेजेस टू ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स. Then comes is conversation, which is like a chatting interface, right? So chatting, वो तो it's obvious the way you guys already chat with the customer. इसमें खाली एक कैच रहता है. In WhatsApp, usually only the customer, for chatting purposes, only the customer can initiate a chat conversation. As a advisor, you can only respond and then a 24-hour window is open. I'll explain that also in the following slides. But mainly होता है कि conversations are usually initiated by the customer itself. आप यूजुअली अगर आपको इनिशिएट करना है तो इट्स थ्रू अ टेम्पलेट. ठीक है. नेक्स्ट इज क्विक रिप्लाई एंड वर्कफ्लो. सो आई थिंक आई ऑलरेडी गिव सम एग्जांपल्स क्विक रिप्लाई एंड वर्कफ्लोज का. सो आई थिंक अब तक तो आई गेस यू गाइस अंडरस्टूड द एसेंस ऑफ वर्कफ्लोज. नेक्स्ट आ गया यूजर ट्रेड्स. अब यूजर ट्रेड्स इज नथिंग बट लेट्स से सर्टन की इन्फोस जो हम लोग यूजर ट्रेड्स मतलब हम लोग जो मैसेजेस जाएंगे उसमें विल गिव यू सम लेट्स से प्लेस होल्डर्स जैसा जैसा आप ब्रॉडकास्ट भेजते हो तो आप डालते हो राइट हाय क्लाइंट नेम, देन यू राइट द मैसेज एंड यू substitute certain values in certain places. So similarly इसमें भी यूजर ट्रेड्स आर दोस्त कि मुझे कोई मैसेज भेजना, लेट्स से एक कस्टमर को मुझे एवरी डे एक मैसेज भेजना है कि योर करंट वैल्यू फॉर एज ऑन टुडे इज दिस मच. तो उसमें मैं डालूंगा योर करंट वैल्यू एज ऑन x is this much, and that x will automatically be mapped to a user trait which will fetch the right relevant information. For example, in this section portfolio EM जैसे अगर मैं example. ठीक है. So now I'll just quickly move to the demo part. Just give me a second. सो अभी इसका एक दो एप्स है. एक तो माई प्लानर पे वील हैव सर्टन थिंग्स ऑन ऑन योर प्लेटफॉर्म एज वेल, बट देयर इज अनदर इंटरफेस कमिंग अप फॉर यू गाइस व्हिच इज द चैट मैनेजमेंट. पूरा व्हाट्सएप का एक व्हाट्सएप हब करके हम लोग लॉन्च कर रहे हैं. अब ये व्हाट्सएप हब है क्या? सो इसमें सी दिस इज द इंटरफेस वेयर यू कैन. अभी ये मैं अपना चैट खोला हूँ. सी आई जस्ट क्विकली सेंड द मैसेज फ्रॉम व्हाट्सएप. जस्ट गिव मी अ सेकंड. हेलो एवरीवन. सो क्विकली वो अगर करोगे तो आपको यहाँ पे रियल टाइम डेट आने लगेगा. एंड सिमिलरली यू कैन ऑल्सो रिस्पॉन्ड वट एवर यू वांट टू इमोजीज एवरीथिंग एक्सेट्रा एवरीथिंग कैन बी सेंट एंड रिसीव्ड. सो आप यहाँ पे पूरा चैट एक जगह पे देख पाएंगे. यू कैन ऑल्सो हैव टीम मेंबर्स एंड एवरीथिंग एंड यू कैन असाइन चैट्स टू टीम मेंबर्स. सो ये आपका बेसिक चैटिंग एरिया आ गया. इसमें मैंने कुछ क्विक रिप्लाई सेटअप किए हैं. आई ऑल्सो शो हाउ दे कैन बी सेटअप. बट जस्ट टू शो यू एन एग्जाम्पल कि क्विक रिप्लाई करने से क्या होता है कि अगर मैं ऐसे सामने से अगर कस्टमर ने बोला वॉच डेमो वीडियो तो उसको डेमो वीडियो का यूट्यूब लिंक चला गया. अब यहाँ पे आपको प्रीव्यू शायद नहीं दिख रहा होगा बट मुझे यहाँ पे अगर मैं व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट दिखा सकता. सो व्हाट्सएप पे मुझे वो पूरा डेमो वीडियो का यूट्यूब वीडियो दिख रहा है. सिमिलरली हाउ टू अप्लाई फॉर LMF ये सब मैंने उसमें सेटअप किया था तो यहाँ दिखने लगा. सो एनीथिंग यू कैन सेटअप अकॉर्डिंग टू योर ओन कन्वीनियंस एंड सिस्टम विल ऑटोमेटिकली अलाउ इट टू डू दैट. ठीक है. सो इसके मैं अभी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप में सारे सेक्शन से आता हूँ. तो डैशबोर्ड इज नथिंग, यू विल सी सम मेट्रिक्स एट द फ्रंट. कॉन्टेक्ट कितने हैं, कैंपेन्स कितने किए थे, टेम्पलेट्स कितने अप्रूव्ड है, चैट्स कितने हैं एंड सो फोर्थ. बाकी डैशबोर्ड पे उसके बाद नेक्स्ट इज चैट्स. सो चैट्स वी ऑलरेडी डिस्कस. सो चैट्स में अगेन सो चैट्स में देयर आर मल्टीपल थिंग्स. आप तो डेमो वीडियोस और ये सब तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी अपलोड कर सकते हो फ्रॉम द सिस्टम. बट उसके अलावा फॉर योर टिकट मैनेजमेंट पर्पसेस देयर इज आल्सो एन ऐड नोट्स ऑप्शन. सो दिस इज लाइक एन इंटरनल नोट. आई हैव
called the client, but let's say he did not pick up. So ये this is only for you and your team to see कि ये let's say Sagar tried to call the customer, but the customer did not pick up. So ऐसे आप भी अपने end से पूरा setup करके रख सकते हो कि every ticket management will have some notes also associated with it कि इसका हो गया, इसका बचा है, जो and so forth. So ये पूरा यहाँ पे आप कर पाओगे. Next is contacts. So contacts by default we we are going to sync all your people section में जो client contacts होते हैं that will automatically get migrated here. So any contacts that are coming in एक दिन में वो सारे transfer हो जाएंगे. We have a every day we have a system running that syncs the data between the two systems. Alternatively अगर कोई lead भी add करना है, you can also manually add this and add a contact. एक बार contact add कर दिया then you can easily start chatting with the customer. ठीक है. नेक्स्ट इज द टेम्पलेट्स पार्ट. सो टेम्पलेट्स में देखिए दिस इज हाउ द टेम्पलेट्स देखिए अप्रूव या रिजेक्ट होता है. सो यहाँ पे अगर क्रिएट करना है, सो यू हैव टू जो गो टू क्रिएट टेम्पलेट, यू हैव टू गिव द टेम्पलेट अ नेम. लेट्स से हैप्पी दिवाली फॉर एग्जांपल. So, Abhi, I wanted to emphasize on this utility or marketing. So, there are actually three types of templates: marketing, utility, and authentication. Authentication usually OTP जैसे messages होंगे उनको authentication describe किया जाता है. Utility messages are those where कुछ for example you get a ticket from book my show, right? जब आप टिकट बुक करते हो, या सिमिलरली कुछ लेट्स से ट्रेन टिकट बुक किया तो यू गेट अ ट्रेन टिकट. सो दोज आर यूटिलिटी कि आप कुछ काम का भेज रहे हो. लाइक मैंने अगर लेट्स से एमएफ का रिपोर्ट भेजा किसी को, सो एमएफ की रिपोर्ट इज अ यूटिलिटी मैसेज. मार्केटिंग हो गया हैप्पी दिवाली या एनी मैसेज दैट यू आर सेंडिंग फ्रॉम अ मार्केटिंग एंगल, दैट विल बी कंसिडर्ड एज मार्केटिंग. डिफरेंस इसमें क्रिटिकली ये है कि मार्केटिंग का चार्जेस आर हायर, यूटिलिटी का चार्जेस आर एक्सट्रीमली लो. सो what we also on our end when we do campaigns to you guys, right? So what we also try to do is we try to keep it as much as possible to a utility angle so that our costs are minimal. So Deirdre, I'll also teach you how these things are there. But for now, let's continue with, let's say, utility. And language, I'll take English. So even if you take a template as utility, there's a chance that WhatsApp will understand your chat and it will convert it to marketing or utility based on their own AI, right? So even if you are saying utility, it can still get converted to marketing. So do not assume that if you have selected utility, it will be approved as utility. So let's say I'll just say Happy Diwali uh, to you. Uh, Hi, I'll also say hi customer name. So I want to say, let's say hi Sagar, but now I don't want to use Sagar. I want to send this to thousands of clients. So how can I do that? I can just simply set add variable. So instead of here, I'll just remove this from here and I'll replace it here. So hi one, happy Diwali to you. So WhatsApp has this style where they do this kind of a placeholder setup: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and then in the next screen I'll show you have to map 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 to the right traits. Where I'll say one means name, two means current value, three means whatever, and so forth, so forth. So here you can see right here. So that's how it is. I'll just remove these. So here now this is here you have to just add a sample example. Let's say hi Sagar. Now this will be sent to WhatsApp for reviewing purposes, and they will either reject or accept based on if they feel the content is right. Okay. So once you create and once you save, WhatsApp will either approve or reject the template, and you will get the status accordingly. So yeah, now it is rejected. So because I imported in utility, so there would be certain cases where it is rejected, certain times it's approved. So you'll have to be careful in terms of what kind of template you are creating. Now, if I do this marketing, let's say same template, then it will get automatically approved because it is a marketing uh, uh, campaign. So now if I create, okay, it's the same campaign. So
So nowadays, see, it will take some time and it will get approved eventually. Firstly, it got rejected immediately because it was clearly not a utility message. So those are so on and so forth. You'll have to try out once or twice. On our end, also, we are trying to change this mechanism so that you don't have to upload the same template twice, where we will automatically retry for marketing internally so that your time is saved. Continuing on this, I wanted to also show certain more other things. So here in this message itself, let's say I was showing you this, right? So you also see the preview. You can even in the headers, you can also add an image or a video or a document. Let's say if you want to share those up as well, right? So whatever you want to add, image, video, document, you can upload those. And there are also buttons associated with it. So buttons are nothing but, let's say, I'll just quickly add this and I'll remove this. So in buttons, you have four types of buttons. One is offer code. Offer code, most likely you may not use it as much, but let's say custom button. Now, custom button is nothing but a simple text. Let's say it could be anything, demo video, call back, call me in some time, anything. It need not be a particular configured something, but preferably what I would rather do if I was using this on these, I would keep such buttons where on clicking these buttons, so when the customer taps on it, you will receive a second automated reply through quick replies when we look at it, right? So you may have already tried it when you get messages from our end, right? You will see such replies automatically coming in. So this is basically the custom auto replies that you see, custom buttons. Then you can also add a custom phone number where let's say you say, uh, let's say call, you add the country code and you write the phone number. The customer will see a button like this and he can just tap on it. It will open the dialer. It will dial a call. Similarly, on the website, you can say the website uh, by website and you can write, let's say, facebook.com, for example. So it will automatically redirect to facebook.com when you send this message. So these kind of buttons, you can always have it in your messages and it will get easily approved. Um, One good example for this would be, let's say, if you are sending your app link to your client, so you can send uh, my app, let's say, and you can add your app store URL, Play Store URL, and you can send it accordingly. So similarly, you can have two buttons saying Play Store app, Play Store URL, and similarly App Store URL, and you can send different links. And it's easy for your customers to download the relevant app and start using the mobile app itself. So that was the second part. Coming to automation. So this is where the quick reply magic happens, where you create certain quick replies where you, let's say, I'll just say test or dummy. You will say if some customer says, let's say WhatsApp webinar. I'll just say WhatsApp webinar. And there is two options. So exact match means exactly if customer says these words or content. So someone says, how was WhatsApp webinar? Then also this response will trigger. Let's say it was wonderful. It was a very nice webinar, or you can even have a webinar URL, right? So now if I, from my chats, if I trigger the same message, WhatsApp webinar, it will look, I'll just quickly. So I sent the message WhatsApp webinar and I'll automatically get a reply saying it was a very nice webinar. So these kind of things you can, based on your own creativity, you can create your own auto replies. For example, giving file templates. If someone says, I want to upload a file, I want to understand how to do this, those kind of template things, you can easily do it from the system. कि बहुत बार होता है ना कि कैश फाइल कैसे अपलोड करनी है, तो कैश फाइल आप ये वेबसाइट पे जाइए, कैश डाउनलोड करिए और सिस्टम में आके अपलोड करिए. सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स. और भी कुछ एग्जांपल अगर लेना हो, ट्रांजेक्शन जैसे प्लेस करना है, सो मुझे, तो मैं मोबाइल ऐप में जाऊंगा, यहाँ क्लिक करूंगा, वो एवरीथिंग यू कैन इजीली कॉन्फ़िगर इट इन द buttons and easily when the customer asks he automatically receives a reply. इसमें हम लोग फिलहाल अभी एआई फिलहाल है नहीं, बट वी आर आल्सो कमिंग अप विद एआई वेयर एआई कैन आल्सो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट एंड send the appropriate reply. Obviously you will have control over it, but when it comes up, we'll have another session on that where you can see and understand how that will work out. सेकेंड इज टीम मेंबर्स. तो यहाँ पे आप टीम मेंबर्स भी ऐड कर पाओगे आपके. एंड वंस यू हैव मल्टीपल टीम मेंबर्स, यहाँ पे चैट्स में आपको एक असाइन का ऑप्शन भी आ जाएगा कि ये चैट आपको किसको असाइन करनी है यहाँ पे. सो आई विल असाइन दिस चैट टू, लेट्स से इफ आई हैड कपल ऑफ टीम मेंबर्स, आई विल असाइन दिस चैट टू
let's say Mayur, and then second chat I'll assign it to Ronak, and third chat to Sagar, let's say. So everyone is having equal amount of work, and everyone is resolving their own queries. So this is basically it. Settings where there are certain onboarding related activity that our team will take care of. You may not have to worry about it too much. So now I'll come to our platform. So अभी with our platform what is different? So आपने यहाँ पे देखा ना, this is अब although this is like a complete WhatsApp area, here also since the data syncing cannot be as extensive as we'd like to be, uh, you would not be able to send, those kind of templates that I was discussing about. Let's say रिमाइंडर भेजना है, मैच्योरिटी और मैच्योर हो रही है एफडी, सो वो भेजो. तो उसके लिए हमने क्या किया, माई प्लानर पे ही यहाँ पे हमने कैंपेन एरिया बना दिया. अब कैंपेन्स में क्या है, सो हमने यहाँ पे एक तरह से चार टाइप के कैंपेन्स दिए. सो एक हो गया वन टाइम कैंपेन. वन टाइम कैंपेन वाला मुझे एक बार कुछ भेजना है. इट कुड बी इंटीग्रेटेड रिपोर्ट्स और इट कुड बी हैप्पी दिवाली ऑल्सो. इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में हो गया मेरे को म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो वैल्यू सबको भेज देना है, सिंपल एग्जांपल. या फिर मुझे अभी जैसे हमारा एसआईपी ड्राइव भी आ रहा है, राइट. सो एसआईपी ड्राइव का जो एसआईपी का महाकुंभ का जो इवेंट आ रहा है, उसमें इफ यू वांट टू सेंड क्लाइंट्स की मैं एसआईपी ड्राइव कंडक्ट कर रहा हूँ, व्हाई डोंट यू गाइस, सो आई विल बी कंडक्टिंग एसआईपी ड्राइव ऑन 8 मार्च. आप लोग भी उसी, मेरा उस दिन टारगेट है कि 500 एसआईपीज में करूं. सो व्हाई डोंट यू गाइस डू, व्हाई डोंट यू गाइस, सो उसका अगर आपको लेट से कैंपेन करना है, सो आप वो भी यहाँ से कर पाएंगे विद द राइट कंटेंट. सो दूसरा हो गया कि scheduled campaigns, कि मुझे जैसे अभी फिलहाल यू गाइस सेंड बल्क रिपोर्ट्स टू योर क्लाइंट्स, राइट, एंड दैट इज अ पीडीएफ फॉर्मेट. अभी विद व्हाट्सएप यू कैन ऑल्सो सेंड इट वाया टेक्स्ट की योर टुडेज करंट वैल्यू इज 5,000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल. सो ऐसे कुछ भी आपको रूटीनली आपको कुछ भेजना है, मार्केट आज गिर गया, मार्केट ऊपर गया, वो सारी चीजें आप शेड्यूल भी कर पाएंगे कि एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ चले जाए कस्टमर. नेक्स्ट आ गया इवेंट ट्रिगर्ड. इवेंट ट्रिगर्ड इज नथिंग बट कुछ इवेंट बेस्ड आपको कुछ करना है कि बर्थडे पे या मैच्योरिटी पे या मैच्योरिटी के पहले बाद में, वट एवर दोज काइंड ऑफ थिंग्स ऑलरेडी आप लोगों ने रिमाइंडर्स देखा है. सो समथिंग सिमिलर विल कम अप हियर. एंड देन देयर इज द अलर्ट्स एंड नोटिफिकेशंस पार्ट, वेयर कुछ भी ओटीपी का भेजना है या ट्रांजेक्शन सक्सेस, ट्रांजेक्शन की पेमेंट लिंक, वो सारे आप सीधा व्हाट्सएप पे कस्टमर को भेज दे रहे हो कि पे नाउ करके बटन पे यू आर सेंडिंग द लिंक, राइट. So these are the broadly the four categories. So firstly, we'll go through the one time and then I'll just quickly show you the other three categories as well. So one time, okay. So one time अभी मैं so use case. So अभी next क्या है कि you have to choose a use case. So ये use case क्यों important है? We have actually created, let's say, around we are constantly will be adding, but फिलहाल हम लोग ने अभी demo purposes के लिए we have added 5 or 6 use cases which strongly showcase the variety that is possible. So यूज केसेस क्या है, मतलब इससे सिस्टम क्या करता है कि अगर आप यूज केस में बोल रहे हो कि एमएफ रिलेटेड, लेट्स से एमएफ का समरी रिपोर्ट, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसके लिए प्रॉपर वेरिएबल्स लेके आएगा. नाउ दीस आर जस्ट डमी दैट आई एम शोइंग, देयर कुड बी 10 अदर वेरिएबल्स दैट विल कम अप. सो सिस्टम विल ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कि कौन से इसके लिए कौन से राइट प्लेस होल्डर्स है. कि कुछ जनरल अवेयरनेस है तो उसमें जरा कुछ नहीं, खाली क्लाइंट का नाम इज इनफ. वेयर एसआईपी का है तो उसमें कुछ ये चीजें होनी चाहिए. सो वो सारे सिस्टम डेटा पॉइंट जो यूज केस के बेस पे लाएगा. सो यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि मुझे अगर क्लाइंट को भेजना है कि उसका करंट वैल्यू इतना है या ये इतना है, so what is the right kind of a use case that I want to use, and then the right placeholders will come up, and then you can use these placeholders to send a message to your clients. Okay. So next it's date and time. So I'll just, let's quickly say, just give me a second. Yeah, I'll quickly say today at, let's say, 6 p.m. And then who do you want to send it to? Do you want to send it to an existing tag? So already you guys are knowing about tags. You guys have already created a lot of tags. So do you want to send it to a group of clients? Do you want to create a new tag on the fly? Or do you want to send it to everybody? So you can send it to everybody. Then you will be, by default, we also give on each type of use case, we give a suggested template as well. A default, content that we have in our, we have thought about कि when you are sending, let's say आप हमें समरी रिपोर्ट भेज दो, तो उसमें क्या होगा, हाय अगर करंट वैल्यू इतना होना चाहिए, वैसा करके एक बना के रखा है. अब ये महाकुंभ का हम लोग ने एक जैसा कंटेंट डाल के रखा है, तो आपको जरा कुछ इसमें चेंजेस नहीं करना है. यू कैन जस्ट सिंपली यूज दिस टेम्पलेट एंड सेंड दिस ऑटोमेटिकली. सो अगर मैं यूज भी करता हूँ,
ऑटोमेटिकली ये भर के आ गया। अभी आपको खुद यहाँ पे चेंजेस भी करना है, लेट्स से खुद यहाँ पे मुझे ऐड करना है, वाई नॉट इन्वेस्ट, वाई नॉट इन्वेस्ट ऑन दैट डे, तो आप वो चेंज कर लें ऑन दैट, ऑन दैट डे। सो आप ये आराम से कर सकते हैं, इसमें इमोजी डालना है इमोजी आप डाल दीजिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल। सो पूरा आप अच्छे से सेटअप करके यू कैन इजीली क्रिएट द कंटेंट। उसके डेटा पॉइंट भी ऑटोमेटिकली सिस्टम विल ब्रिंग अप, लेट्स से अभी अगर मैं इधर देखूं, सो अभी ये एमएफ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो मैं अगर एसआईपी का ही दिखाऊं, सो ऑटोमेटिकली सिस्टम उसके जो उधर डेटा पॉइंट्स थे वो ले आता है। और अगर ये मुझे अगर सेम अगर मुझे इसके लिए करना होता, लेट से करंट वैल्यू वाले के लिए, समरी रिपोर्ट के लिए, सो अभी अगर मैं एग्जांपल दूं, तो इधर मैं लिखूंगा लेट से हाय सागर, सो आई ऐड अ वेरिएबल, और करंट वैल्यू इज, लेट से ऐड अ वेरिएबल फॉर दिस स्कीम, फॉर लेट से स्कीम नेम इन फोलियो नंबर दिस, लेट से। सो अब ये तो ऐसे बन गया। अब मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा, वन में लेट से इन्वेस्टर नेम, टू में उसका करंट वैल्यू आना चाहिए, थ्री में उसका स्कीम नेम आना चाहिए, फोर में उसका फोलियो नंबर आना चाहिए। इन ईच आई ऑल्सो हैव टू से फॉल बैक, लेट से वो सिस्टम का डेटा नहीं हुआ। सो हाई यूजर, योर करंट वैल्यू इज लेट से जीरो फॉर एग्जाम्पल, स्कीम नेम इज डैश, अगर नहीं मिला सिस्टम में उसका डेटा तो, और full number is dash. So then now system has figured out all the things that are necessary, and अभी अगर आप भेजोगे तो ये automatically it will get sent to the customer. So this is how you will have to create on the system. अभी आप जब ये करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमने अपने एंड पे दो तीन ऑटोमेशन करके रखे हैं, कि जो हमने दो स्टेप में देखा, यहाँ पे हम दो स्टेप में देखे थे राइट, पहले आपको एक टेम्पलेट बनाना पड़ता है और फिर कैंपेन करना पड़ता है। हमारे एंड पे हमने क्या कि यहाँ पे नेक्स्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली सिस्टम टेम्पलेट भी क्रिएट कर देगा, और उसके बाद वो भेजने का भेज भी देगा। और अगर नेक्स्ट करते हो रिव्यू स्क्रीन में अगर आपको वो टेम्पलेट रिजेक्ट होता है या कुछ होता है, तो आपको वो कंटेंट एडिट करना है, वील हाईलाइट, ठीक है। सो दैट इज द मेन पार्ट। इसी में आपको अगर लेट से कुछ बटन डालना है, बटन भी आप डाल पाएंगे, सेम जैसे मैंने वहाँ पे दिखाया, वेबसाइट यूआरएल डालना है या कुछ भी डालना है, फोन नंबर डालना है, यू कैन इजीली डू दैट, दोस थिंग्स हटाना है तो हटा भी सकते हैं आप, ठीक है। तो दोस काइंड्स ऑफ ऑल द थिंग्स आर देयर। इसमें भी अगर हेडर में आपको इमेज या वीडियो अपलोड करना है, प्रीव्यू भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। लेट से मैं अगर कोई एक सैंपल भी ले लूँ, सो ये देखिए ऐसा वो दिखने लगता है प्रॉपर, तो आपको कस्टमर को क्या जा रहा है वो प्रीव्यू भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। एंड देन लेट्स से अगर मैं सिमिलरली इसका भी दिखाऊं, लेट मी जस्ट ओपन द पेज। सो अगर मैं अभी इसका दिखाऊं इवेंट ट्रिगर्ड लेट्स से, तो वन टाइम का हमने देखा, अभी स्केड्यूल देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो स्केड्यूल में भी स्केड्यूल स्केड्यूल में भी सिमिलर, नाउ यूज केस आपने चूज किया, सो लेट्स से अगर मैं समरी रिपोर्ट लेता हूँ वापस, सो इसमें यू गेट अ फ्रीक्वेंसी ऑप्शन कि वीकली करना है, मंथली करना है, ईयरली करना है। अगर वीकली भी करना है तो वीकली में कौन से दिन भेजना है, हर रोज भेजना है, डेली, या लेट्स से खाली मंडे ट्यूसडे भेजना है। और अगर मंडे ट्यूसडे भेजना है तो कितने बजे भेजना है, लेट्स से आपको 3 बजे भेजना होगा दोपहर में। सो वट एवर यू वॉन्ट, यू कैन सेट इट अप अकॉर्डिंग टू योर ओन प्रेफरेंस। अगर मंथली कर रहे हो तो आपको कौन से तारीख को भेजना है, लेट्स से मुझे 5th ऑफ एवरी मंथ एंड 20th ऑफ एवरी मंथ, दो बार बाई मंथली भेजना है। सो यू कैन डू दैट, वो सिस्टम ऑटोमेटिकली देख के वो दो बार महीने में भेज देगा। एंड सेम विद ईयरली, ईयरली में लेट्स से मुझे जनवरी एंड जुलाई, ये हर हाफ ईयर में भेजना है। सो फर्स्ट ऑफ दीज टू ईयर्स आई कैन सेंड एट लेट्स से 9 AM इन द मॉर्निंग। एंड देन द नेक्स्ट स्टेप्स आर सिमिलर, वो टैग आप चूज करेंगे एंड देन टेम्पलेट सिलेक्ट करके यू विल जस्ट सेंड। सो वो ऑटोमेटिकली देन इट गेट्स scheduled कि वो ऑटोमेटिकली सिस्टम विल स्टार्ट सेंडिंग व्हेनेवर द राइट डेट्स अराइव। उसके बाद अगर अगला मैं बोलूँ, सो अगला इज योर इवेंट ट्रिगर। अब इवेंट ट्रिगर्ड में इवेंट, सो इवेंट ट्रिगर्ड में देखिए आप ये क्या होगा, इसमें यूज केसेस भी हम अलग देते हैं कि इसमें आपका आगे एसआईपी रिमाइंडर या बर्थडे या एफडी मैच्योरिटी। सो एफडी मैच्योरिटी अगर मैं एग्जांपल लूँ तो उसमें देखिए अगर आप देखेंगे तो वैल्यूज भी अलग है, मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ एफडी, मैच्योरिटी डेट, बैंक नेम, इन्वेस्टर नेम, एफडी नंबर। सो अभी उसमें राइट कॉलम्स भी दिख रहे हैं जो किसके ऊपर आपको ट्रिगर करना है, लेट्स से मैच्योरिटी डेट कब करना है, बिफोर करना है, ऑन द सेम डे करना है, या आफ्टर 1 डे करना है। सो लेट्स से अगर आप आफ्टर 1 डे कर रहे हो तो मैच्योर होने के एक दिन बाद जाएगी, सिमिलरली बिफोर कर रहे हो तो एक दिन पहले जाएगी, एज अ, तो आप अकॉर्डिंगली कंटेंट भी यू कैन ट्विक
कि लेट से आप एक दिन पहले जा रहे हो तो आप वो अलर्ट दे दोगे कि कल आपकी एफडी मैच्योर हो रही है। या लेट से एफडी का नहीं, मैं एग्जांपल लेता हूँ कोई इंश्योरेंस रिमाइंडर का, इंश्योरेंस पॉलिसी का। सो इंश्योरेंस पॉलिसी में आप एक दिन पहले क्या भेजेंगे कि बी रेडी और इंश्योरेंस पॉलिसी इज ड्यू टुमारो, काइंडली मेक द पेमेंट्स इन एडवांस। सेम ऑन द डे भी आप सिमिलर भेजेंगे, एंड आफ्टर द डे यू विल सेंड अ कंटेंट सेइंग कि आपकी पॉलिसी ओवरड्यू हो गई है, लैप्स होने से पहले वापस पे कर दीजिए। सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन जगल, एंड यू कैन क्रिएट कितने बजे आना चाहिए। सेम यू कैन ऑल्सो डू दैट हियर, कि बर्थडे हो गया तो आपको रात को 12 बजे ही भेज देना है, तो सिस्टम विल ऑटोमेटिकली पिक दैट अप, 12 बजे वो सीधा शूट कर देगा ऑन द डे करके। ठीक है। रियल टाइम में भी सेम, यू कैन जस्ट क्लिक, लेट मी जस्ट रिफ्रेश दिस वंस। सो रियल टाइम वाले में अगर मैं दिखाऊं तो रियल टाइम वाले में भी यहाँ जाके यू विल गेट द राइट चीजें कि ट्रांजेक्शन सक्सेस, उसमें डेटा पॉइंट्स आ गए। नाउ यू विल जस्ट ड्राफ्ट द कंटेंट फॉर दिस, लेट्स से अगर मैं, सो यू जस्ट ड्राफ्ट द कंटेंट कि ट्रांजेक्शन अमाउंट क्या है, ट्रांजेक्शन स्टेटस क्या है, वो सब करके आप लास्ट स्टेप पे चले जाओगे, तो यू कैन जस्ट सिलेक्ट द राइट प्लेस होल्डर्स, एंड यू कैन से कि हाय सागर, योर योर ट्रांजेक्शन इन लेट्स से एक्सिस ब्लू चिप फंड फॉर 500 रुपीज इज सक्सेसफुल। तो आपका इजीली वो सिस्टम, जैसे ही वो ट्रांजेक्शन पंच इन करता है, ही गेट, जैसा हमको एनएससी हमको जैसे इन्फॉर्म करेगा, विल ऑटोमेटिकली ट्रिगर मैसेज फ्रॉम आवर एंड कि हाय सागर, योर पेमेंट इज सक्सेसफुल, वैसा। क्लियर? So yeah. So majorly this will be the kind of activities. Now these are just samples that I was showing. So we'll also keep adding more and more stuff. This is just the first draft that we have created in terms of the types of campaigns that can be done. For us, it's going to be more or less adding data, adding the type of message that we want to send, and the templates are going to be pretty much easy to add for us. So showing certain other things now. Just let me get back to this. So अभी इससे आपका फायदा क्या क्या हो रहा है? एक तो आपका ओपन रेट, जो मैं बोला था कि ईमेल्स पे कोई दिखता नहीं है, व्हाट्सएप पे 10% इज अ वेरी कंजर्वेटिव नंबर व्हेन यू टॉक अबाउट इट। मोस्टली इफ यू आर डूइंग इट फॉर योर क्लाइंट्स, द ओपन रेट कैन बी एज 80 to 90% राइट। सिमिलरली क्वेरी रिजोल्यूशन, सिंस अभी आपका कोई टीम मेंबर छुट्टी और ये सब का कुछ होगा नहीं, लेट्स से इफ यू आर आल्सो इन अ मीटिंग, आपका कोई टीम मेंबर वो देख रहा है, किसी ने बोला मुझे पेमेंट करना है, वो टीम मेंबर आपका इनिशिएट कर देगा, तो क्वेरी भी रिजॉल्व जल्दी हो रही है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह का भी ऑनबोर्डिंग का जो होता है, इजीली व्हाट्सएप पे आ रहा है, आपका इधर सेटअप सब रेडी है, यू कैन इजीली डाउनलोड द डॉक्यूमेंट्स एंड अपलोड इन द सिस्टम। सो आपका जो भी ऑनबोर्डिंग है, केवाईसी, ये वो सब आपका क्विकली होते जा रहा है। एंड पहले अगर आपको किसी को रिपोर्ट भी भेजनी थी व्हाट्सएप पे, इट वाज अ रिलेटिवली लेट्स से स्लाइटली टीडियस प्रोसेस, कि आप वो रिपोर्ट डाउनलोड कर रहे हो, एक मैसेज ड्राफ्ट करके कस्टमर को भेज रहे हो। अभी आप यहाँ से अगर दिन में आप 10 रिपोर्ट भेजते थे, तो आपका करीब करीब 1 घंटा तो उसी में निकल जाता था, कि आप कुछ किसी को हैप्पी बर्थडे भेज रहे हो, किसी को कुछ अलग भेज रहे हो, किसी को ट्रांजेक्शन लिंक भेज रहे हो। नाउ वंस यू सेट अप ऑल द थिंग्स दैट आई शोड राइट, सो देन यू डोंट रियली हैव टू इवन लुक एट इट, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम हैप्पी बर्थडे देख के भेज देगा। सिस्टम आपका ट्रांजेक्शन लिंक ऑटोमेटिक, आप ट्रांजेक्शन इनिशिएट कर दोगे, वो उसको पहुंच गए रहेगी लिंक। फिर रिपोर्ट्स भी अगर आप शेड्यूल करके रख रहे हो, ऑटोमेटिक रिपोर्ट चली जा रही है। सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स, तो आपका दिन का आधा टाइम ऐसे ही बच जा रहा है कि आपको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन पार्ट। स्टिल इफ यू वांट टू स्टिल गो आउट ऑफ द वे, एक क्लाइंट को कुछ भेजना है, हाँ वो फिर भी मैनुअल रहेगा, बट स्टिल इट वी आर ट्राइंग टू ऑटोमेट थिंग्स एज मच एज वी कैन। सो दैट वाज द मेन कंसेप्ट। अभी अगर आपको व्हाट्सएप ज्वाइन करना है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? सो आई थिंक समवन वाज आस्किंग द चैट आल्सो। सो देखिए, अभी इसमें आपका एग्जिस्टिंग व्हाट्सएप नंबर नहीं चलेगा, एंड आइडियली चल जाएगा इफ यू डिलीट, बट आई वुड रेकमेंड कि आप ना ही यूज करिए एग्जिस्टिंग नंबर। यू कैन टेक अ न्यू नंबर, लैंडलाइन भी चल जाएगा, एंड दैट नंबर प्रेफरेबली शुड बी अ लॉन्ग टर्म नंबर, नॉट ऑफ अ स्टाफ और समथिंग, बट ऑफ अ प्रॉपर आपका सेट ऑर्गेनाइजेशन का नंबर हो तो बेटर है, सो दैट इफ अ स्टाफ वर्क्स आउट और समथिंग, तो आपका वो नंबर स्टिल आपके पास इंटैक्ट पड़ा रहे। हैविंग सेड दैट, हम लोग ने भी आई शो दैट एज वेल, हम लोग ने भी एयरटेल के साथ पार्टनरशिप किया है, वेयर इफ यू हैव problems in terms of acquiring a number and that process involved, we will send you a form and I'll show the process. तो वो एक छोटा फॉर्म भर के you can easily complete the whole uh, what सिम जनरेशन प्रोसेस ऑल्सो। तो हमारी टीम फिर यहाँ से आपको एक केवाईसी की लिंक भेज देगी, जिसका आप केवाईसी फॉर्म भर देंगे, सो एयरटेल की तरफ से आपको एक नंबर इशू हो जाएगा, एंड दैट वुड बी वेरी मिनिमली चार्ज। आई शो द चार्जेस एज वेल। सो मार्केट में आप जा रहे हो तो आपका जो नॉर्मल रिचार्जेस होते हैं उससे रिलेटिवली कम है।
Again, you can still, you are free to go and pick your own number if you want to. It's not bound that you have to take a number from us. Secondly, Facebook account obviously is mandatory because as you guys already know, WhatsApp comes under Meta, which is traditionally Facebook का ही है. So Facebook में भी आपको अकाउंट चाहिए रहेगा प्री फेसबुक पे. प्रोसेस वाइज अगर मैं बोलूँ, फेसबुक पे वी देन आवर टीम हैज टू क्रिएट योर बिजनेस एंड डेवलपर अकाउंट्स, एंड उसके बाद एक ऑनबोर्डिंग प्रोसेस थोड़ा रहता है विच टेक्स अबाउट लेट्स से अ वीक ऑफ टाइम, क्योंकि उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सब भी होंगे बिकॉज यू आर गेटिंग अ प्रॉपर ऑफिशियल व्हाट्सएप वेरीफाइड नंबर, राइट. तो वो पूरा प्रोसेस हमारी टीम विल असिस्ट यू उसमें. आई विल शो द राइट प्रोसेस एज वेल. दूसरा, व्हाट्सएप के चार्जेस का आई टॉक्ड अबाउट इन द टेम्पलेट्स पार्ट, राइट्स की जो जो टेम्पलेट्स होते हैं, मार्केटिंग इज कॉस्टलियर, यूटिलिटी इज चीपर. सो कमिंग टू द चार्जेस एज वेल. So, talking about this, so when a customer initiates a conversation with you, let's say, "Hi Sagar, how are you?" and so on and so forth. So then all the messages become free for you. उस दिन आपको जो भी बात करना है आप आराम से कर सकते हो, उस पर आपको कुछ चार्जेस नहीं है. एंड व्हाट्सएप के डेफिनेशन के हिसाब से अ कन्वर्सेशन लास्ट फॉर 24 आवर्स. सो वो 24 आवर विंडो में, लेट्स से अगर मैं आज दोपहर 3 बजे आपको मैसेज करता हूँ, सो आज 3 से लेके कल 3 बजे तक आप कितना भी कुछ भी मैसेज भेजिए, वो एक तरह से फ्री है आपके लिए. तो सेकंड है, आप इनिशिएट कर रहे हो, कस्टमर ने कुछ मैसेज हाय हेलो भेजा ही नहीं, उस केस में क्या होता है, आप हाय हेलो ऐसे नॉर्मली नहीं भेज सकते. यू हैव टू सेंड अ प्री अप्रूव टेम्पलेट. दिस इज डन बाय मेटा टू अवॉइड स्पैम टू यूजर्स. सो अगर आप कुछ टेम्पलेट प्री अप्रूव भेज रहे हैं, लेट्स से आपने कुछ रिपोर्ट भेजा या कुछ भेजा, सो देन इफ द कस्टमर रिप्लाइज, देन द चैट ओपन्स अप टू चैट एंड टॉक टू द कस्टमर. अदरवाइज जो आप टेम्पलेट भेज रहे हो उसका चार्जेस रहता है. सो अगेन, इफ यू आर इनिशिएटिंग, एक बार ही चार्ज लगेगा. लेट्स से अगर आपने एक मार्केटिंग मैसेज भेजा तो एक बार आपका 0.82 रुपीज लगेगा, एंड देन 1 डे का आपका पूरा चार्जेस फ्री हो गया. सिमिलर यूटिलिटी यू कैन सी इट इज एज लो एज 0.14, राइट. सो अगर आप यूटिलिटी का कुछ प्रॉपर ये मैसेज भेज रहे हैं कि बल्क रिपोर्ट आपका ये आज का करंट वैल्यू इतना है, या आपका ओटीपी ये है, सो एंड सो फोर्थ, सो इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कॉस्ट फॉर यू. इसमें अगर मैं कुछ हैक्स बताऊं, सो व्हाट वी आल्सो फॉलो, राइट. सो अगर आप लेट्स से आज शाम को एक कैंपेन कर रहे हो हैप्पी दिवाली करके, सो लेट्स अगर 4 बजे आप एक मैसेज भेजो, कल दोपहर में अगर आप भेजते हो, सो देन दैट बिकम्स फ्री. हाँ, सो दैट बिकम्स फ्री. बिकॉज क्या हो रहा है कि आपका 24 आवर विंडो के अंदर ही ये पूरा चीज है. बिकॉज 24 आवर्स के अंदर मेटा ओनली चार्जेस यू वंस. इसमें दो डबल चार्जिंग ऑफ दैट मैसेज डजंट हैपन. सो आप उन 24 आवर्स में आप 10 बार मैसेज भेजो, इट्स फ्री फॉर यू. So that is the best part. By the way, in this utility and authentication, just one correction. It is actually 16 to 19, not 14 to 17. I was just pointed it out. So 16 paisa for at the minimum, and 19 paisa is the maximum as charges. Um, so I'll go to the next slide. Okay. So we'll be launching it with 3 plans. There would be a lot of features that I showed. Some would be available in certain, and some, just to highlight, I have just highlighted some critical features. Ki 1,000 free conversation per month are always there. Then you will get one-time campaign in the silver plan, and the gold you will get these additional features which are not there in the silver plan, which is unlimited team members, quick replies, scheduled campaigns, and event triggered. And when it comes to platinum, these features are there. Plus you will get that notification part, plus workflows, and workflows and all that. And you also get campaign analytics, where how many people saw the message, how many people did not see the message. All those kind of metrics you'll be able to see and track easily. So initially, however, we have launched an early bird offer where instead of 400, 800, 600, all plans will be launching you guys directly in platinum at 200 rupees per month. And this price is not introductory. It will be 200 till the next 6 months from whenever you start using, right? So let's say if you start using WhatsApp even in the month of March after your onboarding is completed, from March till the next 6 months, you'll be charged only 200 per month. After that, maybe the normal pricing will follow, whatever plan you will choose at that point of time. We also have onboarding charges, which is of 2,500, but as an early bird offer, we are giving it 2,000 plus GST. So this again will help. There will be these charges are so that
our RMs will then assist you in terms of the onboarding process. We have set up a set of people who will help you do the whole process from start to finish. You know, in terms of creating your business account, creating a developer account, and then onboarding your WhatsApp number, even assisting you for the Airtel SIM card that I was talking about. And then I have created the steps also. Let me just show that here. So see, these are the steps: Facebook developer account creation, empanelment on WhatsApp, setting up your business number and connecting it to IFANOW, and SIM card process. So we also created this payment link. So I'll just quickly share this link also. So people who are, keen on getting started, you guys can easily just pay it up away, and then our team will start coordinating with you guys directly from the next week onwards, where we'll take you up with the onboarding process and get into it completely. So So, and the last part is, like I said, the SIM card part. So, SIM card, Airtel has provided us, since we are giving many of our users will not want to hassle for SIM cards, right? So, Airtel का ये tie up हुआ है कि since we are also getting it in bulk, they are giving us at an exclusive rate of 149 per month. So this, for users who are taking a SIM card from us, you will get it at 149 per month, and this amount will be added in your billing, in your monthly billing as well. So yeah, ये main था. So I think now we can move on to question answers. First, I'll take up the question answers from the chat, and then I'll open up the Q&A for discussions as well. So let me just go from start quickly. Um, you try to log in with you. Can we use exist? You cannot use your existing number. You'll have to create a fresh number without physical SIM. Yeah. So Rahul Agarwal, yeah, that's what we are talking about. So when you talk about this Airtel SIM, the SIM will our team has tied up with Airtel for that. So you don't really have to carry the SIM and all that. So calling features are not available on that SIM. It's only for onboarding. Our team will you will have to follow up with us for the OTP and all that, and you are done. So that SIM card will stay safe with us, and you can even transfer the SIM card if you want the ownership of the same. Um, I have a WhatsApp number registered with ASNC. So Ashish, it is possible, but um, I would recommend having a new number, because what will happen is, in the meantime, it will create some noise between you and your customers, because how seamlessly the data gets transferred, your old data and all that, we'll have to see. So let's see how it happens. I'll discuss this separately at a later stage maybe. But preferably, I would recommend you take a new number and slowly phase that out, and phase that number out slowly and come to this number. Like, just to give you an example, even you used to receive communications from our end from a separate number, but when we got this blue tick number from our end, slowly we started doing campaigns, and you guys also got accustomed to this new number. So that is what I would recommend to you as well. And do you require a new mobile number for WhatsApp integration, or I request WhatsApp requires now? Yeah, done. This is already answered. I have already enrolled for API number through. Can I switch from? Yeah, I already answered that. I have WhatsApp business. Bill 1 WA API number. Bill 1 WA API number used on different platforms. Um, no, one API number is only strictly used on our one platform. So no, it won't be used on multiple platforms. If it is linked to, okay, it's answered. Timelines to get is done. I've already enrolled in ASNC. I cannot send. Okay. Do I need connect client software? Okay. Okay. Let me just quickly complete the chat, then I'll open the question answers also. Is this swag upshare? No. Will the number be visible? Okay, it's done. I have 4,000 WCC. Okay. Integrated with source. Yeah. Is there any discount for MFT? It's just my
Rohit, currently it's at a very discounted rate of just 200 rupees. So further discounts, I don't think we are giving to anybody. Uh, there is no data there. Could you please repeat on that? The sale. So, so those will initially will so the ownership will be yours. We'll do your KYC, but the SIM will reside with us. If you want the SIM to your end, then we'll have to ship it. But then Airtel, since it's under our plan, then Airtel will charge you separately for that. We can take this discussion with our RM. They'll be able to guide you better on this. After 1 year from now, what will be the charge per annum? So it's 1600 per month, right? So 1600 into 12 will be your charges plus GST. So can you please unmute? Can client get OTP authentic? Ashish, just give me a minute. I'll give you an opportunity to talk. We can discuss that. Can client get OTP authentication on WhatsApp? So NSC has two options. Either you can send. So we are also coming up with a bulk transact feature where you can do this. Maybe we'll also have a webinar for that in the coming days. So you'll understand that as well. But NSC has two options. Either uh, they send the email directly to the customer or they send a link to us as IFANOW. So if we get the link, then client will never receive an email. And once we have the link, we can send it on any platform, right? Email, WhatsApp, or even to you on the front end. So you can pay from there itself. So yeah. Sachin, if I give my existing number for integration, no, you cannot use this number for on normal WhatsApp then. Can I do normal chatting? You can do normal chatting provided the client replies or has started. So then you have a 24-hour window to chat openly. Otherwise, WhatsApp doesn't allow you to, chat otherwise. What about GST? So for people without GST, it's not a problem because even individual people can onboard. There are different verification requirements. They'll take your Aadhaar card and all that. And if you do not have a website, even your Facebook profile can work as your website for verifications. So that our team will help you when you start onboarding. So it wouldn't be a problem. All charges like planned. Yes, yes. You have to, we'll be billing you guys. I have a personal number plus number from office. So you're saying, uh, see, Priyanka, if you haven't integrated your office number on WhatsApp, you can easily integrate that with us. It won't be a problem. But if you are already on WhatsApp, I would recommend you to take a different number or maybe a landline office number, which you can use for these purposes. Whether new SIM. So if you are taking your SIM on your own, you can use that SIM for calling, etc., everything. But if you are taking the SIM from us, we are only taking a SMS only plan where you can only, you'll only see OTPs and all that. So if it's from us, then no. But if you're taking your own SIM, then yeah, you can do anything from with that SIM. Only for WhatsApp, you won't be able to, download WhatsApp on your phone because that will delete your this account. So look, if there's new SIM, it would mean clients would get a message from a completely different number. Yeah, temporarily, initially, it would be a hassle for the customer for a day or two, but I don't think it's going to be a that big of a challenge because suddenly, let's assume your company name is, let's say, Acme Financial. Suddenly, he's getting a message from Acme Financial green tick number, and you are just giving a welcome message. Then the customer gets used to, now I have to talk to this person. Initially, even when we started this same process with our existing advisors still for a week or a month, let's say, still contacted RMs on their personal WhatsApp, and slowly and steadily everyone migrated to the company number. So there will be some transition time, but yeah, eventually it will be better for you guys overall, right? So amount paid, yeah, okay. Whether transactions can be done by investors. Yeah, they can do the transactions, but I think that won't have any relevance with WhatsApp right now. I have another number, but I'm not using actively. Yeah, you can use that number provided it doesn't have WhatsApp. If you do have WhatsApp, preferably get the account deleted right away because otherwise, if you don't delete it, then there's a long wait. You will have to wait maybe 3-4 days to start again. So yeah, Avinash, yeah, recording will be provided on YouTube. This video will go on YouTube again. Is this for existing client? Yes. Okay, it's replied. Links for purchase can be sent. Yes. Everything will still, again, having said that, we'll first be launching the chatting feature, then we'll start with one-time campaign, and slowly and steadily we'll keep adding more and more campaigns where scheduled campaign and all that.
So everything will keep coming out in a phased manner. For demo purposes, I showed all the types that we'll be adding, but things will start getting phased out in a very phased manner where you will receive, let's say, the chatting interface maybe in a couple of weeks. Then you in a week or 2 weeks you will receive the next feature. Then again the next feature. So it will be slowly things will keep getting added up. So yeah, can we send thousands of people? You can, but yeah, as replied, you'll have to look at it. Uh, So payment done. Okay, yeah. How to pay onboarding charges? Okay. So if there are three RMs and no, you don't need one single number is enough. Yeah. Give me recording. I'm is okay. All answers. Okay. So now I'll be opening the Q&A for everybody to ask questions. So yeah. Yeah, Ashish, you wanted to ask something. Maybe you can go first. Hello. Okay, I think now it's on. Now you can unmute. Sorry. Sorry, now you can do it. Hello, Ashish, are you able to? I think there's some setting glitch with your mic. Maybe, Ashish, what I can do is I'll take a couple of questions. You can maybe rejoin in a minute. I can't see your mic icon as well. So maybe some permission setting with your Zoom. So yeah. Until then, maybe Purna, you had raised your hand. Can you ask? हाँ यस सर, एक्चुअली मेरा ये व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई ऑलरेडी है। और हाँ। वो मैं ये म्यूचुअल फंड बिजनेस के लिए भी यूज करता हूँ। और मेरा और एक तो है जो मैं आईटीआर फाइलिंग करता हूँ, तो उसमें क्या है कि मैं जो भी लीड है उनका एक्सेल सीट अपलोड करके बल्क में व्हाट्सएप मैसेज में करता हूँ आईटीआर हम्म। फाइल। तो इसमें भी एमएफडी जो है उसका जो सब प्रोसेस है, इसके बाद भी अलग बिजनेस के लिए भी हम वैसे प्रमोट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं क्या? हाँ, आप दो नंबर भी रख सकते हैं या आप उसको भी इसमें भी अगर आपको वो नंबर बंद करके एक ही नंबर रखना है तो आप वो भी कर पाएंगे, या आपको दो सेपरेट नंबर रख के दोनों पे करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। लेकिन मेरा ये है कि मान लीजिए अभी इधर शिफ्ट करूंगा तो हम्म। वो एक्सेल बेस्ड जो डाटा है मेरे पास ऑलरेडी, जिसको मैं आईटर फाइलिंग के लिए मैसेज करता हूँ और कुछ बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस के लिए जो मैं बनाता हूँ, तो उन क्लाइंट को हम्म। क्या मार्केटिंग के लिए। हाँ हाँ, आप अपलोड कर सकते हैं ना। आप उनका एक आप क्लाइंट्स को आप सिस्टम में अपलोड कर दीजिए और फिर उनका हाँ। एक टैग बना के आप उनके ऊपर कैंपेन कर पाएंगे। ओके, ठीक है, तो वो एमएफ का क्लाइंट नहीं होके भी उनको मैं ये सब कर सकता हूँ इधर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप लीड की तरह कैसे भी ऐड करके आप कर पाएंगे। वो हमारी टीम आपको बता देगी। ओके ओके, तो लीड के हिसाब से हम ये करके टैग उनको क्रिएट करके उनको टैग देके हम मार्केटिंग कर सकते हैं इधर भी। हाँ, तो दो ऑप्शन है। अभी मैंने आपको जैसा वो दिखाया था ना, एक तो आप सिस्टम से कर रहे हो तो आप सिस्टम के थ्रू कुछ प्लेस होल्डर बेच पाएंगे। बट दूसरी ओके। तरफ आप ये भी कर पाएंगे कि लेट से अगर मैं इधर जाता हूँ, सो हम्म। इधर भी इनके इंटरफेस में हमने जो ये बनाया है इसके अंदर भी यहाँ पे बल्क अपलोड दिया है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ओके अपलोड करके इनका भी एक ग्रुप बना के आप भेज सकते हैं इसके थ्रू भी। तो ओके उसमें ओके आपको ओके प्लेटफॉर्म पे अपलोड करने की चार्जेस वो नहीं है, चैलेंज। ओके ओके। अभी मैं हाँ। डबल टिक का यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं पूछा सर। ओके, ठीक है। ओके, थैंक यू। या या आशीष, नाउ यू आर Yeah. टर्न। Now, I'm going to give you specific question. First of all, I have registered with ASMC. I was not aware that after the other movie this platform. आशीष, योर वॉइस इज नॉट क्लियर एक्चुअली। Sorry, I'm not able to hear you. I'm saying hello. One second. हाँ, Can you hear me now? a little bit, it's little better, but it's still a bit muffled. Okay. Can you hear me now? Yeah, maybe go on. I'll try to understand. Okay. So I have registered with AISMC. I was not aware Mm-hmm. that we are coming on with such a platform. Now, my business WhatsApp API is active, is active,
Okay, but you're not chatting, right? Sorry, I am not using that platform as yet. I just onboarding process was going on. Okay. Then you can easily migrate. Then you will be able to migrate easily. Then there's no worries. You'll just have to, we'll help you, our team will help you in deleting that old number directly from Facebook account itself. You don't even have to get to ASNC then. And you can then integrate the same number directly with us and it will get onboarded seamlessly. That will be better, no? Because otherwise, Yeah. then don't want to be carrying so many numbers there. That number is already active, so that will be better. The process Yeah, will. yeah, yeah. And then I'm assuming your onboarding is also mostly likely done. Then half of it would already be done because you had already created an account with ASNC. So it would be even faster then for you. Okay, okay. This was one part. The second part was there is integrated CRM platform in this, right? Sorry, you are not Yeah, audible. integrated. Hello, Yeah. can you hear me? Yes, yes. Much better. I think there is CRM platform integrated in this for my team as well. Yes. Yes, yes, yes. Okay, so that is part of the team package. We don't have to do anything separate for that. No, no, no. In that 400 and 1600, everything is included. Okay. Once we When I go, release this, we are going to release a complete brochure also, what exact features are available in which plan, all the FAQs and everything. So you'll get even further clarity what plan is perfect for you. Anyway, initially all plans for, let's say, till we are finalizing the last date, but maybe till end of March or end of Feb, we are going to keep these rates. So till that time, everyone who is paying, let's say, is getting 200 rupees, right? So anyway, it's going to be all plans are going to be the same for you, and we'll keep all the features open for you guys till that time. when are we going live with this? Sorry. When are we going live with this? So Live onboarding process will start next week onwards. Onboarding will start next week onwards, and then in the coming weeks we'll start slowly and steadily as and when one of each and every feature gets started completed, we start releasing them. So every week we are planning one or two things that we'll ship. So my first when we were client को जो template भेजना है तो your valuation as on date is so and so invested value is so and so तो वो कब को भेज सकता हूँ मैं? तो वन टाइम वाला हम लोग है ना जल्दी कर देंगे कि वन टाइम हम लोग उतना अभी वी आर कमिंग टू कम्प्लीशन, बट जो रिकरिंग वाला पार्ट है ना उसमें स्केड्यूलिंग वेड्यूलिंग वो हम लोग को थोड़ा और टाइम जाएगा, एंड धीरे धीरे वो इवेंट वाला जो है मैच्योरिटी बर्थडे वो सब धीरे धीरे फिर एक के बाद एक बनाते जाएंगे हम। ओके ओके और मेरा ये अभी जैसे I my planner पे I am the group head मैं group head हूँ और मेरे family members match हैं नीचे suppose four different family members are matched under me as a और मेरे को जब ये भेजना है रिपोर्ट भेजना है और मैसेज भेजना है तो मैं इंडिविजुअल क्लाइंट इंडिविजुअल फैमिली मेंबर्स का अलग से देख सकता हूँ या वो सिर्फ ग्रुप हेड का कंबाइन जाएगा? गुड क्वेश्चन एक्चुअली। तो इनिशियली हम लोग ग्रुप हेड के साथ लॉन्च कर रहे हैं एंड स्लोली एंड स्टडीली हम लोग फैमिली मेंबर लेवल पे भी जाएंगे। तो इनिशियली सारी रिपोर्ट्स क्योंकि अभी सिस्टम रेडीमेड रिपोर्ट्स जो बनी हुई है वो ग्रुप हेड की ज़्यादा है, सो इसलिए इनिशियली वील लॉन्च विद ग्रुप हेड एंड स्लोली स्टडीली हम लोग फिर उसको फैमिली मेंबर पे एक्सटेंड करने वाले हैं। ऑपरेशनली क्या होता है सपोज मैं ग्रुप हेड हूँ और मेरे अंदर 4 फैमिली मेंबर्स है तो यू नो आई वांट टू सी दैट इंडिविजुअल फैमिली मेंबर्स का सेपरेटली तो अगर मैं कस्टमाइज नहीं कर पाऊंगा तो फिर वो पैकेजेस नहीं करना पड़ेगा प्रोसेस इंडिविजुअली डाउनलोड करके इंडिविजुअली टेम्पलेट बना के फिर अलग से भेजना पड़ेगा। हाँ नहीं नहीं सही बात है, मैं समझ गया वो, बट उसके लिए भी हम लोग कुछ ला रहे हैं, कुछ कुछ चीजें जैसे अंदर आप फॉर एग्जांपल एक मैं आइडिया दूं तो जैसे आपका एमएफ समरी रिपोर्ट है वहाँ पे भी एक शेयर और कुछ फिल्टर कर लिया आपने, वहाँ पे भी एक व्हाट्सएप आइकन आ जाएगा जहाँ पे आप वहीं का वहीं सेंड कर पाएंगे, धीरे धीरे वो सब भी आएगा। बट वो अभी स्टेप बाय स्टेप हम लोग जा रहे हैं कि एक साथ हम लोग भी आप लोग को भी ओवरवेल ना करें कि इतने सारे फीचर आ गए आप लोग को समझ में टाइम जा रहा है।
तो धीरे धीरे आपको एक एक चीज मिलते जाएगी और ये धीरे धीरे पूरा फुल स्केल बन के आ जाएगा फिर। ओके, लास्ट सवाल, ये जो मेरा जो व्हाट्सएप एपीआई नंबर है, हाँ ये हाँ है, ये मेरा नॉर्मल सिम है, कॉलिंग सिम है, तो हाँ। अ, ये सिम पे मैं इंडिविजुअल व्हाट्सएप फोन में डाउनलोड कर सकता हूँ या नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे आप। अच्छा, तो ये जो नंबर है, ये नंबर सिर्फ कॉलिंग पे रख सकते हैं हम लोग? हाँ, और आप ये जो हमने इंटरफेस बनाया है इसको आप मोबाइल पे यूज करेंगे तो इट स्टिल गिव्स यू द एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट्सएप। आप मोबाइल पे भी सेम ब्राउजर पे चला पाएंगे, बट फिलहाल के लिए उसको आप व्हाट्सएप ऐप में नहीं चला पाएंगे। वहां पे आप चलाएंगे तो आपका ये अकाउंट उड़ जाएगा। सो बिल्कुल भी वो गलती से भी मत करना। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, तो ठीक है, मैं मेरे आदमी से बात कर लेता हूँ फिर ये ऑनबोर्डिंग का। श्योर। RSM थैंक Murthy, I'll show the pricing chart again. Just give me a second. Let me just open it. हेलो, Yeah. हाँ, कुछ कह रहे थे आप? Who's this? Sorry. आप कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं, सो मैं एक्चुअली ये चैट में क्वेश्चन आया प्राइसिंग दिखाने के लिए। सो अच्छा, RSM मूर्ति, देखिए 200 रुपया पर मंथ फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स वी आर गोइंग टू चार्ज एंड देन द नॉर्मल रेट्स विल अप्लाई। एंड पर मैसेज कॉस्ट ये है, वेर यूटिलिटी पे ये गलत लिख दिया बट 16 to 19 रहेगा, और मार्केटिंग पे 82 to 85 रहेगा। तो ये कॉस्ट रहने वाला है फॉर पर डे पर क्लाइंट आप मैसेज भेजेंगे तो, अगर आप इनिशिएट कर रहे हो। अगर कस्टमर इनिशिएट कर रहा है तो फिर कोई फिर आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। एंड अगर आप लेट से उसमें भी कि बी एड ऑल्सो ट्राइड डिस्ट्रिक्ट्स की पहले यूटिलिटी भेजते हैं फिर मार्केटिंग, देन वो व्हाट्सएप हायर चार्ज करते हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लोग, हमने भी ये बहुत बार ट्राई किया कि पहले हम 14 वाला भेज देंगे एंड देन फिर ये भेजेंगे कि फ्री हो गया, देन व्हाट्सएप इज ऑल्सो स्मार्ट टू चार्ज दिस, देन तो वो आपका थोड़ा देख लेना। Early bird. See, early bird, Pinakin, we are keeping it open till end of Feb, but most likely, थोड़ा वैसा भी है कि अगर enough users are in, then we will close the early bird offer as well. So it's not yet confirmed कि कितना है, तो I would recommend कि जितना जल्दी हो सके आप ले लीजिए। RSN Murthy, what? So utility will obviously be preferable because utility का charges it's like 4 times less, right? Otherwise marketing अगर आप 1000 लोगों को भेज रहे हो तो आपका 800 रुपया का कॉस्ट आ रहा है, whereas अगर utility आप 1000 लोगों को भेज रहे हो तो आपका 4 to 5 times आपका खर्चा कम हो जाएगा। So that is going to be the difference that will help you, help, I mean, reduce your cost as well. So जितना हो सके टोन में भी अगर आप स्पेशली मैसेजेस भेज रहे हैं कि रिपोर्ट भेज, स्पेशली इन सीरियस मैसेजेस वेयर यू आर सेंडिंग रिपोर्ट्स एंड ऑल दैट, उसमें अवॉइड करिए कि कुछ मार्केटिंग कंटेंट हो, सो दैट इट डज नॉट गेट कैटेगराइज इन मार्केटिंग। तो आपका डेली मैसेजेस जो जा रहे हैं उसका चार्जेस कम रहेगा। ओनली ओकेजनल मैसेजेस जो आप हैप्पी दिवाली या कुछ भेज रहे हो वो मार्केटिंग या दैट इज फाइन, क्योंकि उसमें आपको कोई टेंशन नहीं होगा फिर। या हाँ नितिन, आपको यू वांट टू आस्क समथिंग? हेलो। या हाँ सागर, मेरा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है कि मेरा भी इंटरएक्ट के साथ है व्हाट्सअप बिजनेस एपीआई, ओके। तो मैं माइग्रेट कर सकता हूँ? मुझे माई हेलो, माई हाँ बोलिए बोलिए, आवाज कंप्लीट करिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, आ रही है। हाँ, मेरा ऑलरेडी व्हाट्सअप बिजनेस एपीआई है इंटरएक्ट के साथ, हम्म। बराबर। मुझे व्हाट्सअप हब पे माइग्रेट होना है, ओके। तो पॉसिबल है? सी माइग्रेशन पॉसिबल है, बट फिर ओल्ड चैट्स और ये सब का आपका थोड़ा एक प्रॉब्लम आ सकता है। ओल्ड तो चार्ट से मुझे कोई, लेकिन मैंने जब अभी रिसेंटली लिया है, 1-2 महीना ही देन हुआ आप है, तो आराम से ज्यादा। आ सकते हैं। जैसे मैंने हाँ, आशीष जी को बोला कि आप आराम से वो पुराना डिलीट करके आप इजीली कर पाएंगे। एंड ओके इंटरेक्ट से किया तो आपका वेरीफाइड भी होगा तो आपका इजीली हो जाएगा। हाँ, वेरीफाइड है। हाँ तो बस फिर तो, और ओके, आपका और स्टेप्स भी दूसरा फास्ट मुझे है। ये पूछना था कि ऐप रहेगी कि वेबसाइट से ही जाना पड़ेगा? फिलहाल तो वेब ही है, ऐप का आगे हम लोग देखेंगे, बट अभी तो वेब ही है। ओके ओके, वेब से ही करना पड़ेगा। ओके ओके, ठीक है। बट मोबाइल पे भी आप वो ऐप खोल पाएंगे, वो अच्छे से दिखता है। आप ट्राई कर लेना एक बार, मैं जब ये लाइव हो जाएगा तो आप ट्राई करेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। इट्स एज गुड ओके एज ओके, व्हाट्सएप यूज करना। और ये माइग्रेशन प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा? वो देखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग के लिए भी न्यू है, तो मालूम पड़ेगा जब स्टार्ट करेंगे तो फिर उसमें आइडिया लगेगा हम लोग को धीरे धीरे। ओके, बट और ये ज्यादा लगना नहीं माइग्रेशन, चाहिए कि वेरीफाइड नंबर है, और स्पेशली अगर हम डिलीट करके नया बना रहे हैं तो टेंशन नहीं है। अगर माइग्रेट करने के बाद आती है तो माइग्रेट इज अ ट्रिकी प्रोसेस। तो अगर आपका कुछ ज्यादा डेटा है नहीं तो मैं डिलीट करके नया बना सकता हूँ, विच इज वेरी हाँ फास्ट।
हाँ, डिलीट ही कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका। हाँ, बराबर, जो सो उसमें कांटेक्ट है भी वो तो हम अपलोड कर सकते हैं वापस। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और दूसरा है पूछना, ये माइग्रेशन, ये मतलब इसमें आपका टीम हेल्प करेगा, जो ऑनबोर्डिंग टीम रहेगी वो हाँ हाँ हाँ, उसी का वो ही आपके। इसलिए हम लोग कॉस्ट भी ले रहे हैं कि सो दैट हम हाँ, लोग ही पूरा असिस्ट कर करके आपको करा सके। बट अभी ओ, क्योंकि देयर आर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जस्ट वांटेड टू आल्सो लेट एवरीवन नो कि मतलब अगर मंडे ऑनवर्ड्स वील स्टार्ट सीइंग कैसे किसको करना है, बट क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ रजिस्ट्रेशंस कमिंग इन, धीरे धीरे कॉल्स आएंगे, मे बी नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक हमारा कॉल्स विल स्टार्ट लाइनिंग अप विद ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सो मतलब ऐसा मत समझना कि अगर लेट्स से इन फर्स्ट 1 or 2 days you don't get a call, that means we have forgotten. We have the list, we'll start reaching out one by one. ओके ओके, ठीक। Yeah. Anyone else? Raghupreet will share the recording. We'll be posting this on YouTube as well soon. So don't worry. Yeah, Primal, you wanted to ask something? हेलो। Yeah. अच्छा, मुझे ये कंफर्म करना था कि ऑलरेडी हम लोगों का ना व्हाट्सएप बिजनेस है, मतलब और हम जो क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं ना थ्रू द मोबाइल, थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप करते हैं। तो अगर ये व्हाट्सएप पे हम लोग सारी जस्ट बात बोलिए, करते उनका हैं तो बाहर तो जाऊंगा। हम दोनों प्लेटफॉर्म सेम नंबर से यूज कर सकते हैं क्या? एंड नहीं नहीं नहीं, नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मतलब अगर हम लोगों को नया, मतलब व्हाट्सएप पे अगर मैं जो नया नंबर लिया तो वो मैं मोबाइल थ्रू नहीं कर सकती मतलब? नहीं, वो यूज नहीं करते। एंड ये व्हाट्सएप के बिजनेस नंबर पे यू कैन नॉट क्रिएट ग्रुप्स एज वेल। सो वो इंडिविजुअली रहता है। मतलब व्हाट्सएप हब में या व्हाट्सएप नंबर पे बोल रहे हो? नहीं मतलब आप, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर ऑलरेडी यूजिंग अदर नंबर्स ना, तो व्हाट्सएप का जो बिजनेस का आप ऑफिशियल नंबर लेंगे उसमें ग्रुप का ऑप्शन कोई भी ऐप में नहीं मिलता है, व्हाट्सएप हब में भी नहीं मिलेगा, या कहीं और भी आप जाएंगे किसी और का भी थर्ड पार्टी का यूज करेंगे तो उधर कहीं पे भी ग्रुप फैसिलिटी बिजनेस ऐप पे नहीं होता है। ओके, दैट मीन्स जो भी है तो वो इंडिविजुअल क्लाइंट को ही कम्युनिकेट करना पड़ेगा इससे। हाँ हाँ जी। बट वही हमने फिर बल्क मैसेजेस का फीचर दिया है ना, तो आप एक साथ सारे लोग को भेजना है तो आप खाली वो दबा दीजिए बटन, तो वो सबको एक एक करके चले जाएगा। अच्छा, ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। या एनीवन एल्स हैज एनी क्वेश्चंस? ये सर मेरा एक क्वेश्चन है। आप पूछिए। सर, जैसे मैं भी एआई सेंस ही चला रहा हूँ। हम्म। उसमें 10-15 हजार मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं, तो उनको जैसे मैं डेटाज में जो मेरे क्लाइंट नहीं है उनको जो ऐसे प्रमोशन मैसेज भेजता हूँ वो भी यहाँ से मैं भेज पाऊंगा? हाँ हाँ, मैंने एक्सेल अपलोड का दिखाया था ना फीचर आपको, तो वहां से आप एक्सेल जी अपलोड जी। करके आप मार्केटिंग कर पाएंगे। खाली उनको आप हमारे प्लेटफॉर्म से नहीं कर पाएंगे बिकॉज हमारे प्लेटफॉर्म पे उनका डेटा नहीं होगा। हाँ, मुझे पहले अपलोड करना होगा। हाँ, तो आप हमारे कौन से प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, हब पे कर रहे हैं अपलोड की पीपल सेक्शन में अपलोड कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कहाँ पे क्लाइंट दिखेगा। पीपल सेक्शन में करोगे तो आपको दोनों जगह पे हो जाएगा। बट अगर आप हब पे अपलोड करोगे तो खाली हब पे रहेगा वो, मतलब कि पीपल सेक्शन में इंटीग्रेट नहीं होगा। क्योंकि बहुत बार आप जैसे लोगों को हम्म अगर लीड्स को अपलोड करना है, सो आप वहाँ पे करोगे सो दैट आपका पर क्लाइंट कॉस्ट जो हम लोग 2 रुपया चार्ज करते हैं, 2 ढाई रुपये चार्ज करते हैं, वो आपको चार्ज ना किया जाए। ये ठीक सिस्टम है सर। सर, एक हाँ क्वेश्चन और है। हाँ, जैसे बोलिए। हम क्लाइंट का ट्रांजेक्शन इनिशिएट करते हैं ना, तो उनको मेल आता है और एक एसएमएस आता है कि आप इसको ऑथेंटिकेट करिए। हाँ तो बराबर। ये क्या उनको ऐसे ऑटोमेटिक व्हाट्सएप पे भी चला जाएगा क्या कि प्लीज ऑथराइज योर अगर आप सेटअप करें तो हम भेज ट्रांजेक्शन? सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ओके। मतलब वील स्लोली व्हेन वी स्टार्ट रिलीजिंग, जैसा मैंने बोला कि हम धीरे धीरे एक एक करके लाएंगे, जब वो ट्रांजेक्शन वाला लाएंगे तो आप हाँ बिल्कुल भेज पाएंगे। क्योंकि क्या होता है सर, ट्रांजेक्शन करो फिर उनको फोन करना पड़ता है कि आपको ईमेल आया, आप कंफर्म करिए उससे। हाँ, तो अभी तो व्हाट्सएप हो जाएगा तो आपको टेंशन नहीं है, आप आराम से वो कर पाएंगे। ओके सर, थैंक यू। या Malay, do you have chatbot and orchestration features? Workflow is coming in. Quick replies are there. Chatbot will take some time. That will come up. Can we integrate this? Nishant, right now I most likely will say a no, but I don't know. I'll have to actually understand your chatbot and then I can comment on it. Mostly for now, we'll keep it a no because currently we also have a lot of things in our pipeline that we want to focus on. So we cannot accommodate such requests. But maybe once we are live and going well, then maybe we can look at it. Does it integrate Zoho? No, you can although just you can download the data and upload the leads in the system. That feature you'll have to do manually. Uh, Automatically, we won't sync it with Zoho. Yeah, Pratik, you wanted to ask something?
So I want to ask that the bulk transaction feature or any transaction feature that you're going to bring on this WhatsApp, is it only for like NSC, BSc or MFU also? All three. All three. Oh, cool. So firstly, we'll also be, so we are already almost done. So we'll first release it on email, via email only. So whenever we do, maybe we'll have a webinar on that as well. Because our SIP Markup is also coming in, right? So in that we want to help you guys, give you tools in terms of allowing you to send links to thousands of clients in one clicks. So that's where we'll also have webinars on that as well. So next Wednesday when we do have the SIP webinar, do join so you'll get more hints on those things, and slowly and steadily we'll release that as well. So yeah. सर Varun. जो नया नंबर रहेगा वो कॉल्स के लिए यूज नहीं होगा ना, इट विल बी एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर व्हाट्सएप क्लाउड. अगर आप खुद नंबर खरीद रहे हैं एयरटेल जियो वोडाफोन जाके, सो देन आप वो नंबर को सब चीज के लिए यूज कर सकते हैं, कॉलिंग वॉलिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं. हमारे थ्रू अगर एयरटेल ले रहे तो बिकॉज वी देन हैव द सिम कार्ड एट आवर प्लेस, सो वी विल नॉट रिचार्ज इट फॉर कॉल्स, वी ओनली कीप इट फॉर एसएमएस. So आपका कॉस्ट भी मिनिमल है, एंड बिकॉज वी कैन नॉट आंसर योर क्वेरीज, सो दैट्स व्हाई वी विल कीप इट ओनली एसएमएस ओनली. श्योर बट अगर आप खुद ले रहे हो तो देन यू कैन टेक द नंबर फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग. श्योर. आई रियली वांट टू अप्रिशिएट सर, बहुत अच्छा स्टैंड लिया आपका कंपनी ने, एंड दिस इज रियली गोइंग टू बी अ गेम चेंजर. थैंक यू वेरी मच. Yeah, thank you so much. Yeah. So any other questions? So for some of you who are asking the PPT and all that, we'll slowly start sending those as well. वो हम लोग धीरे धीरे सब भेजेंगे, एंड प्लेटफॉर्म पे भी आपको ये दिखने लगेगा ऑनबोर्डिंग एंड ऑल दैट के लिए. सो थोड़ा टाइम हम लोग को भी दे दीजिए, मतलब एक आध वीक थोड़ा और टाइम दे दीजिए. वील स्टार्ट रिलीजिंग धीरे धीरे सबको हर एक चीज. थोड़ा अभी फिनिशिंग का काम चल रहा है, तो बस वो होता है, वील स्टार्ट रोलिंग आउट ईच एंड एवरीथिंग धीरे धीरे करके टू एवरीवन. एनी अदर क्वेश्चंस? वेरीफाइड बाय सचिन, सो देयर आर टू स्टेप्स. एक तो हो गया ऑनबोर्डिंग, दूसरा हो गया ग्रीन टिक वेरिफिकेशन. दोनों सेपरेट प्रोसेस है. ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस इन इटसेल्फ इज अ लिटिल cumbersome एंड सिंपल डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ org यू हैव, लाइक प्राइवेट लिमिटेड ऑल दैट, तो फटाफट हो भी जाता है. बट ग्रीन टिक प्रोसेस इज अ सेपरेट प्रोसेस पूरा, एंड उसमें देर आर सर्टन रिक्वायरमेंट्स जो आपको हम बताएंगे, एंड देन वो डिपेंड करता है फेसबुक के पॉलिसीज के ऊपर, वुड यू गेट इट और नॉट. मोस्ट लाइकली मिल जाता है, बट देर आर सर्टन क्राइटेरिया दैट यू हैव टू फुलफिल. सो फर्स्ट थिंग दैट वील ऑल्सो बी फोकसिंग ऑन इज, पहले आप लोग को ऑनबोर्ड करके एक स्टेबल अकाउंट हम लोग सबको दे देंगे, वेर यू कैन स्टार्ट चैटिंग विद योर कस्टमर्स, एंड देन हर एक का ग्रीन टिक प्रोसेस वील स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप, सो दैट आप लोग को भी एक यू गेट अ हुक ऑफ इट, एंड वंस यू आर कंफर्टेबल देन योर वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट. Verification charges, Filal, to be honest, Sachin, we have not thought of it. So most likely, let me get back on this right now. It's not right for me to comment because I don't have the right answer to this right. Yeah.